Good morning, students. I am Vikas Kulshrestha. I'll be taking your data structure and algorithm lab. So before going to start, first of all, I'll tell you regarding the marks distribution of data structure and algorithm. As per RTU timetable and RTU syllabus, marks distribution are as follows. For the lab, total marks is of 75 marks. Internal and sessional are 45 marks, out of which I'll take the assignment of 20 marks, quiz of 20 marks, and 5 marks is for attendance. These assignments can be on online also, or subjective also, or the multiple choice questions also. As far as your externals are concerned, 20 marks is for written test and 10 marks is for Viva Voice. So this is for all about the marks distribution. Now we'll discuss the prerequisite for this lab. So first of all, you must have a knowledge of the C language. So C language, I hope that you have studied in your first semester. So you all be aware about the C language, what it is all about. Second is the concept of structures. A little bit of structures also we'll discuss in the coming lectures. Then the students must know the concept of implementation of the structures with the pointers. Fine, that is also an important topic. You must have aware about the structures also and the pointers also. The structures are the derived data types. And the last one is the online ID for the C language. See, in this regard, I'm not suggesting you to use Boldland, or might be you are using online ID. So you just go through, you go with the online ID. It is available. I'll just show you in the practical also. So, or you can use, if you are using Linux, then you can use VI editor also. That is not a problem. Now I'll tell you how this lab works. So first of all, what will be the procedure? What will be the flow of this lab? So first of all, we'll discuss the concept of the experiment, whatever the experiment will be taking up. Then I'll show you the implementation of the experiment, a little bit of it. And then I'll give you the assignments related to that experiment. So I'll give you some live examples, or we can implement the live projects also if possible. And then I will conduct a practical once in a week. Fine. So this practical lab has to be once in a week. So we'll see. If you want, then I can take twice a week also, but we can go with the flow. Fine. So let's start our lab session. So in the first experiment, what we have to do, we have to implement the 1D array and the 2D array. And the assignment is that you will have to implement 3D array and the 4D array, and you have to store the data and you have to access the data. Don't worry about it. I'll show you the implementation of the 3D array also. Don't worry. Fine. So before going to that experiment, just have a little bit of theory. एक बार हम लोग theory पढ़ लेते हैं कि theory क्या कहती है, क्या होती है theory. So I'll just refresh your concepts, your previous syllabus of C language. So first of all, we'll see what do you mean by an array. So students, array is nothing but it is a collection of the same data types. Like example, like if we write int a, so that means this a is an array which stores the integer data type. This big bracket you are seeing here, this big bracket is the declaration of the array. We can initialize the array like this. This is the syntax of an array. And if you want to store the float data type, the decimal data type, then we can write like this: float x big brackets. So this is the syntax of an array. But there is a drawback of the array also. The function of an array is the drawback itself of the array. See, in the practical world, or when we are talking about the practical data, we are not always having the same kind of data. We will be having, like suppose if we have a student data, then in the student data we will be having the student name also, father's name also, enrollment number also. This enrollment number consists of alphabets also, it consists of integer values also, and we have other kind of data types also. So in the array, this is a drawback, that
it is a collection of the same data type. So that is the part. Fine. So this is the little bit introduction about an array. So first of all, just we'll go to the uh, practical part. So I'll show you how to do the practicals. Fine. So in the Google, you have to just write online C compiler on that first link, which is www.onlinegdb.com. You just click on it. When you click on it, this compiler editor will comes upon. So when we run this program, this is you all know this is a very introductory part of the program, like hash include. I just explain it. I'll explain it again. This hash include stdio.h is nothing but your header file. Anything which will be writing with the hash is the preprocessor. So hash include, that means we are telling the compiler to include the stdio.h. stdio.h is nothing but your header file, standard input output header file. This integer main, so main function है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है. दैट मीन्स कि क्या है कि मेन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए. लेकिन अभी इस केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ वी आर राइटिंग हेलो वर्ल्ड एंड वी आर रिटर्निंग जीरो, वी आर रिटर्निंग नथिंग. सो दिस इज द सिंटैक्स. I'll just brush up your memories. So this is the way we can write it, and when we run this program, so we can see that here it is saying that hello world. So this is a very small type of program. Fine. So now what we are doing, we will be making the first we'll have a program of 1D array. So first of all, we'll see with the basic part how to initiate the array and how to initialize the array and how to declare the array. So first of all, I'll just make a initialization of an array. Fine. So when I'm writing big bracket, that means it becomes this, and I'm initializing it like I'll just write any kind of values, and after that, sorry, I have to write the big bracket. Fine. And at the end, what you have to write, you have to terminate the statement with the semicolon. Now what I have to do, I have to just printf this command, and now for printing this, what we have to do, we have to implement the this you are seeing is a subscript. Fine. And अरे को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लूप की ज़रूरत होती है. तो हम यहाँ पे फॉर लूप लेंगे, और फॉर लूप को चलाने के लिए काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, और काउंटर हम ले लेंगे आई. तो फॉर लूप चलाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनिशियलाइज इट. मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया. इनिशियलाइज करने के बाद इसको मैंने कंडीशन लगा दी. कंडीशन ये होती है कि जो अरे होता है वो जीरो लोकेशन से चालू होता है, मतलब जो उसका बेस एड्रेस है वो 0 है, 1 है, 2 एंड 3 है. दैट मीन्स मेरे को किस तक चलाना है, लेसर देन 4 तक चलाना है इसको. और उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, एंड देन आफ्टर दैट आई प्लस प्लस. फाइन. स्टूडेंट्स के बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है, %d, और यहाँ पे मैं अरे का नाम लिख दूंगा. अरे का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं काउंटर लगा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा. और जब मैं इसको रन करूंगा, लेट्स सी के व्हाट वी गेट. फाइन. सो इट इज शोइंग एन अरे. फाइन, बिल्कुल सही बात है. अरे यहाँ पे शो एरर कर रहा है, क्योंकि इसको इनिशियलाइज करने का तरीका तो ये होता है, लेकिन जब मैं इसके अंदर वैल्यू सॉरी इसको डिक्लेयर करने का तरीका तो ये होता है, लेकिन जब मैं इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखता हूँ. सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एन एरर. लेकिन अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है आंसर. So here you can see that it is showing 387, 45 and 56. So in this way we can get the output. So यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिल गया है. फाइन.
अब हम लोग क्या करेंगे, फाइन। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यू इनपुट करके देखेंगे किस तरीके से वैल्यू इनपुट की जाती है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैंने साइज इसकी 5 रख दी है। तो इसके साथ मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, अभी मैंने इसको डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं प्रिंट एफ लिखूंगा, देन आई विल राइट एंटर द वैल्यूज। उसके बाद मैं स्कैन एफ स्टेटमेंट लूंगा। स्कैन एफ इनपुट लेता है यूजर से %d %a, और उसके बाद मैं यहाँ पे काउंटर लगा दूंगा i। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा मेरा, ये स्टेटमेंट मेरा वैल्यूज इनपुट ले लेगा और उसके बाद मेरे को इसको प्रिंट एफ कराना है। तो प्रिंट एफ कराने के लिए फिर से मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। और i equals to 0, then again I less than 4, and then इंक्रीमेंट करना है मेरे को i plus plus. So let's see what will be the output. So it is showing an error, बिल्कुल, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 की जगह i लिख दिया है, सॉरी i की जगह 1 लिख दिया है। So again we'll run the program. So enter the values 23, 34, 45, 56 and 78. तो 3 हो गई, 5 हो गई। तो let's see. So values are 23, 34, 45 and 56. So in this way we can implement the 1D array. Fine students. So अभी तो हम लोगों ने 1D array पढ़ा है, इसके बाद हम लोग 2D array को पढ़ेंगे, किस तरीके से 2D array काम करता है। So for today's lecture it's fine, and we'll see the 2D array implementation in the next lecture. Thank you.